जय श्री माता जी। अभी हम सब लोग नतमस्तक होके श्री माता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। विल ऑल बो डाउन टू श्री माता जी, रेज और कुंडली, टेक बंधन। जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी को और हम महसूस करेंगे अभी कुंडली उठा के बंधन लेने के बाद क्या फर्क है। विल ऑब्जर्व द चेंज इन आवर वाइब्रेशंस इन बोथ आवर palms। जय श्री माता जी। आज हम थोड़ी देर के लिए आत्मा के बारे में जानेंगे और उसके बाद ध्यान में जाएंगे। हम जब आत्मा साक्षात्कार पाते हैं तो पहला चीज यह है कि आत्मा इज ऑलवेज थॉटलेस। आत्मा हर वक्त निर्विचार रहता है। आत्मा हर वक्त वर्तमान में रहता है। आत्मा इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। भूतकाल में जब है वो हम नहीं है, भविष्य काल में हम जो बात कर रहे हैं वो हम नहीं है। तीसरा, आत्मा जैसे सूर्य किरण देता रहता है, आत्मा हर वक्त वाइब्रेशन देता है या वाइब्रेशंस लेता है। सो आत्मा इज ऑलवेज एमिटिंग और रिसीविंग वाइब्रेशंस। और फोर्थ चीज हम ये जानते हैं कि आत्मा कलेक्टिवली कॉन्शियस है। जैसे हम इतने लोग हैं बट हमको सबके चक्र के बारे में मालूम होता है। अपना आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा बढ़ता जाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और फिफ्थ वाला है कि आत्मा हर वक्त सच्चिदानंद रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है आत्मा के। देयर आर सो मेनी मोर प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा, बट मोर इंपॉर्टेंटली दीज आर द वंस दैट वी लर्न एंड हियर एवरी टाइम इन श्री माता जी स्पीच। तो अभी क्या करेंगे, अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, वी विल टेक अवर राइट हैंड 2 इंचेस अबव द हेड। फिर महसूस करेंगे वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुला कि नहीं। We are taking our right hand 2 inches above the head। अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर और महसूस कर रहे हैं वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं। अभी राइट हैंड नीचे ले आइए, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। नाउ लेट्स ब्रिंग आवर राइट हैंड डाउन एंड लेफ्ट हैंड
2 inches above the head. Now again we'll observe vibrations are coming and if the Brahmarandra is open. महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुला कि नहीं. ओके अभी दोनों हाथ नीचे ले आइए. नाउ लेट्स ब्रिंग बोथ आवर हैंड्स डाउन. अभी महसूस कीजिए जब अभी हमने जब हाथ ऊपर उठाया तो कुंडली माँ ऊपर चली गई और कुंडली माँ के साथ अपना चित्त भी ऊपर चला गया. With Kundalini Mother, our attention also went up there, and so now our Atma is floating above the head. अभी आप सब लोग को ब्रह्मरंध्र खुला है करके पता चल रहा है? Are you people able to understand? अगर किसी को नहीं पता चल रहा है थोड़ा बताइए तो आज अभी कर लेंगे हम. Are everyone able to feel the ब्रह्मरंध्र on top of the head? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जय श्री माता जी भैया. हाँ बोलिए दीदी. ऐसे तो नहीं पता चल रहा है. हाँ हाथ रखिए. राइट हैंड श्रीमाता जी को और लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रखिए. जय श्री माता जी. मुझे भी पता नहीं चलता है. हाँ राइट हैंड श्रीमाता जी को और लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रखिए. भैया बहुत कुछ घूम रहा है, बहुत तेजी से खिंचाव हो रहा है. लेफ्ट हैंड में ठंडक आ रही थी और राइट जब मैंने रखा तो राइट में ठंडक नहीं आ रही, लेकिन राइट ब्रह्मरंध्र के राइट साइड में बहुत तेज खिंचाव हो रहा है और घूम रहा है कुछ. हाँ रखिए. अभी राइट हैंड श्रीमाता जी पर रखिए, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रखिए और मेरे को 2 मिनट बाद बोलिए विचार कम हो गए कि नहीं. अभी बोलिए विचार कम हो गए कि नहीं. प्लीज लेट मी नो इफ द थॉट्स हैव रिड्यूस्ड. जय श्री माता जी भैया. हाँ अभी रिड्यूस्ड हो रहे हैं. ब्रह्मरंध्र खुल रहा है. अभी खुल रहा ना. वेरी गुड. हाँ. जैसे विचार कम होते जाएंगे वाइब्रेशंस आएंगे ब्रह्मरंध्र खुलता जाएगा. थैंक यू भैया. जय श्री माता जी भैया. जय श्री माता जी भैया. मेरे भी ब्रह्मरंध्र खुला नहीं था, पूरा खिंचाव महसूस हो. और विचार तो बहुत कम है. हाँ जय श्री माता जी भैया. जय श्री माता भैया ब्रह्मरंध्र तो खुला है लेकिन लेफ्ट हार्ट में पता नहीं पेन सुई सी चुभ रही है. हाँ होते रहिए. रहने दीजिए. हाँ जैसे कंधे के बराबर में बिल्कुल. हाँ वेट कीजिए. अभी लेफ्ट हैंड नीचे ले आइए, राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रखिए. नाउ लेट्स put our left hand down and right hand 2 inches above the head. And again after 2 minutes let me know if the parts have reduced and if the vibrations are coming. 2 मिनट बाद बोलिए विचार कम हो गए कि नहीं और ब्रह्मरंध्र आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है कि नहीं.
ओके, अभी बताइए विचार कम हुए कि नहीं और वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं? जय श्री माता जी। विचार तो कम है लेकिन वाइब्रेशन इतना नहीं है। ठीक है, अभी आप 2-3 दिन से ही जुड़े ना, आप ब्रह्मरंध्र का एक्सेस तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, करते रहिए। हाँ, जी जी 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। जी जी। बाकी लोग बोलिए। जय श्री माता जी भैया। यशमा दीदी। भैया राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे बहुत ठंडा आ रहा है लेकिन राइट हैंड में नहीं आ रहा, और लेफ्ट हैंड जब मैं सिर के ऊपर रख रही हूँ तो ठंडा आ रहा है, राइट हैंड में नहीं आ रहा और राइट साइड में खिंचाव हो रहा है भैया। अभी लेफ्ट हैंड शिमाता जी को हो रहा है आपका, हाँ भैया। और विचार आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, खिंचाव हो बस रहा है भैया, सिर में बहुत ऊपर की तरफ खिंच रहा है। ठीक है। अगर विचार नहीं आ रहा है इसका मतलब है आप आज्ञा क्रॉस कर गए, मगर ब्रह्मरंध्र खुला नहीं, निर्विचारता आ गई है। आप पहले वो यूट्यूब बंद कर दीजिए। भैया ये ऐसे हो रहा है जैसे ना बोलने का लगता है सत्यचित आनंद आ रहा है अंदर से, तो बस निर्विचारता आ रही है। अभी राइट हैंड नीचे ले आइए, लेफ्ट हैंड 4 इंच ऊपर। प्लीज पुट योर राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड 4 inches above the head. Now again feel if vibrations are coming and if the ब्रह्मरंध्र is opening. अभी ये महसूस कीजिए कि वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं। 2 मिनट। ये हमको जो भी अभी नए लोग, बहुत लोग नए लोग आए ना, सब लोग को हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुंडलनी उठा के बंधन लेने के बाद ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि ब्रह्मरंध्र अच्छी तरह खुल जाए। So all people who have joined newly in the last 1 month, they have to practice this on a daily basis so that the brahmarandra opens. You have to use hands. हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। महसूस कीजिए ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं और वाइब्रेशन आ रहे कि नहीं। बोलते रहिए दीदी, बहुत कम आवाज आ रहा है आपका। जय श्री माता जी। पूरा बोलिए। विचार नहीं है और वामरंध्र पूरा ठंडा है, ऊपर पूरा वेरी ठंडा है। वेरी गुड। अभी लेफ्ट हैंड नीचे ले आइए, राइट हैंड सर के 4 इंच ऊपर। Now we'll bring our left hand down and we'll take our right hand 4 inches above the head. फिर से महसूस करेंगे कि वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं। Again we'll observe if vibrations are coming and if the brahmarandra is opening. जय श्री माता जी। नहीं आ रहे मुझे वाइब्रेशन। हाँ, प्रमोद। ओके, आपको विचार आ रहे हैं? हाँ जी, विचार आ रहे हैं माता जी के बारे में। हाँ, लेफ्ट हैंड में ठंडक आ रही है? नहीं नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो नहीं, कुछ नहीं आ रहा। हॉट हल्का हल्का आ रहा है, बहुत थोड़ा हल्का हल्का। हाँ, और आप अपने घर के ऑल्टर के सामने बैठे हो? हाँ जी हाँ जी, मैं अपने घर में जो माता जी की तस्वीर है उसके सामने बैठा हाँ, बैठे रहिए। आप कुंडली उठा के बंधन ले लीजिए। हूँ। ले लिया हूँ साहब। हाँ, ठीक है। अभी राइट हैंड नीचे ले आइए सब लोग, लेफ्ट हैंड सर के 6 इंच ऊपर।
Please bring your right hand down and left hand 6 inches above. And again we'll observe if the Brahmarandra is opening and if vibrations are coming. अभी फिर से महसूस करेंगे कि vibrations आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं. ये भी महसूस कीजिए राइट हैंड के सभी उंगलियों में से ठंडी हवा अंदर आ रही है. Also observe if you are absorbing cool air from all the fingers of the right palm as well. Now we'll bring our left hand down. Left hand नीचे लाएंगे. Right hand के 6 इंच ऊपर. Right hand सर के 6 इंच ऊपर. We'll put our right hand 6 inches above the head. And again observe if thoughts have reduced, if vibrations are coming, and if the Brahmarandra is opening. महसूस करेंगे कि विचार कम हो रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं, वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं. अभी राइट हैंड को नीचे ले आइए. लेफ्ट हैंड को 8 इंच ऊपर. टेक योर लेफ्ट हैंड 8 inches above the head. Now left hand down, right hand 8 inches above the head. लेफ्ट हैंड नीचे ले आएंगे. राइट हैंड सर के 8 इंच ऊपर. अभी हाथ को ऐसा ऊपर लेते जाएंगे जहां तक जा सकता है वहां तक. We'll keep taking our right hand up as high as we can. जय श्री माता जी. Keep our attention there and bring it down. चित वहां छोड़ के राइट हैंड नीचे लाइए. अभी लेफ्ट हैंड को सर के 8 इंच ऊपर ले जाइए. टेक योर लेफ्ट हैंड 8 inches up and keep taking it up. और ऊपर लेते जाइए ऐसे. जहां तक ले जा सकते हो वहां तक ले जाइए. अभी चित्त को वहां छोड़ के नीचे आइए दोनों हाथ. लीविंग योर अटेंशन देयर, ब्रिंग बैक बोथ योर पाम्स डाउन. और वहां से सुषुम्ना नाड़ी को महसूस कीजिए. मूलाधार से सहसा, सहसा से ऊपर वहां तक.
सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करते रहिए थोड़ी देर के लिए. For some time we'll just enjoy the सुषुम्ना नाड़ी. अब यही स्थिति में हम एक्सिस के बारे में स्पीच सुनेंगे. In this state we'll listen to the speech on axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the life, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down, like a slavish person, also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna, what sort of a sushumna you have. If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good or talking about Sahaja Yoga or knowing too much about Sahaja Yoga and saying things which will baffle normally anyone as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coiled paper-like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair-like Kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, their outside, what you call the foldings, are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be, outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people.
They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis. And some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. You can call it, it's a puja to God. It's to be done with that reverence. Because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small things people fight. I have seen that in Sahaja Yoga also people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate. Every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort. You're not bothered about any material thing. Whatever it is, you are above it. You just don't bother your head. Let it be. You just don't want to put your neck into a thing where you do not belong. You just get out of it and you think that, oh God, this is too much for me. I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This is the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding. Now, in small things also, say for example, if I have not mentioned somebody and mentioned somebody else, then they feel, oh, why didn't mother mention my name? It's too small a thing that it doesn't matter. As long as you have a deep axis, you are with me, I am with you, absolutely one with each other. But these outward things are, oh, she gave a nice sari to another one, she never gave us a sari, she didn't do this, didn't do that. All those things, if it comes to your head, that means
absolutely is true that there is something lacking within you. Or if you try to complain, oh, I went there, I had to go by a bus and I had to stand on this thing, that shows that you are not comforted. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Sahaja Yoga, but actually seriously doing meditation, actually seriously doing meditation. जैसे श्रीमती ने बताया, हम पूरी तरह सुषुम्ना नाड़ी में रहेंगे तो वो चौड़ा होता जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सुषुम्ना में रहेंगे, मूलाधार से सहस्रार, मूलाधार से सहस्रार, मूलाधार से सहस्रार, सुषुम्ना में रहेंगे। जितना देर हम सुषुम्ना में रहेंगे उतना अच्छी तरह ब्रह्म नाड़ी मोटी होती जाएगी। The more we are in the center channel, the wider the Brahma Nadi, which is the core of the center channel. We will observe Muladhara to Sahasrar, Muladhara to Sahasrar, Muladhara to Sahasrar. As we keep observing, it will become wider, nicely. जैसे हम महसूस करते रहेंगे और वो चौड़ा होता जाएगा। मगर अंदर रहने का आदत डालना है। We are making a habit to stay inside. This is the tapasya. This is the puja that Shrimati is saying. यही पूजा है, श्रीमाता जी बोल रही है, अंदर रहना है। अपना तालुबाग से मूलाधार को महसूस करिए, पूरा सुषुम्ना को महसूस करिए। From top of your head, observe the Mooladhara chakra and observe the Sushumna. जितना देर हम मूलाधार को और सुषुम्ना को महसूस करते रहेंगे वो चौड़ा होता जाएगा। The more we continue to maintain our attention on the Mooladhara chakra and the Sushumna Nadi, the wider the Brahma Nadi.
जैसे बाहर का टीवी देख रहे हैं, अभी अंदर का टीवी देखने का आदत कर रहे हैं. Like how we observe the TV outside, we are looking at the TV inside now. Our TV inside is a Mooladhara chakra and the Sushumna Nadi. श्रीमाता जी बोल रही है ये एक तपस्या जैसा करना है, एक पूजा जैसा करना है, डीप मेडिटेटिव स्टेट में. अभी आपने एक महसूस किया होगा, सहयोग से पहले दिमाग सोचता रहता है, सहयोग के बाद अपना दिमाग साक्षी भाव से देखता रहता है. ये सभी नशे बस साक्षी भाव से हम देख रहे हैं, बस ये आदत हो रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता. वी आर गेटिंग इनटू द हैबिट. बिफोर सहयोगा we are in the habit of thinking. Now we are in the habit of observing, like we are observing the Mooladhara chakra and the Sushumna Nadi. We are moving away from trying to meditate but being in meditation. हम ध्यान कर नहीं रहे, ध्यान में रह रहे हैं. जब साक्षी भाव से देखते रहते हैं तो हम ध्यान में रहते हैं. अभी जैसे अंदर देख रहे हैं आप, हम दोनों हाथों को महसूस कर सकते हैं, मूलाधार को महसूस कर सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को महसूस कर सकते हैं. We can observe both our palms, the Mooladhara chakra and the Sushumna Nadi. So what we are practicing is we are practicing witness state, Sakshi Bhav. So एक स्पीच में श्रीमाता जी को पूछा गया कि श्रीमाता जी हम लोग पूरा दिन ध्यान में कैसे रह सकते हैं. श्रीमाता जी ने बोला कि अगर आपने साक्षी भाव सीख लिया तो आप पूरा दिन निर्विचारिता में ध्यान में रह सकते हो. In one speech in Australia, people asked her, Shrimati ji, how can we stay in meditation all throughout the day? Shrimati ji said, if you can practice witness state, then you can stay in meditation, in vivacharita all throughout the day. Like now we are practicing witnessing our Mooladhara chakra, our Sushumna Nadi and both our palms from top of our head. अभी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने तालु भाग से महसूस कर रहे हैं दोनों हाथों को, अपने मूलाधार चक्र को और सुषुम्ना नाड़ी को. बस अंदर रहने का आदत कर रहे हैं. वी आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्टेइंग इनसाइड एंड दिस इज द तपस्या दैट वी हैव टू डू. और यही तपस्या हमको
करना है, अंदर रहना है। अभी बताइए, आप लोग अंदर रह पा रहे हो? आर यू एबल टू स्टे इनसाइड? मूलाधार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी, बोथ हैंड्स। अभी दोनों हाथ जोड़ेंगे, विल जॉइन बोथ आवर हैंड्स एंड विल से थैंक यू माता जी। रेज और कुंडली टेक बंधन, कुंडली उठा के बंधन ले लेंगे। अभी फिर से आंखें बंद करके फिर से महसूस करेंगे। We'll close our eyes and again observe the Mooladhara Chakra, Sushumna Nadi, both our hands. और देखेंगे कुंडली माँ किधर है, अपना चित्त किधर है और आत्मा किधर है। जो देख रहा है वही आत्मा है। So we'll observe where is our Kundalini mother, where is our attention, and where is our Atma. Atma is who is observing now. We learned about Atma now. Atma is always thoughtless. Atma is always in the present. जो भूतकाल में है, भविष्यकाल में, वो हम नहीं है। जो अभी ये महसूस कर रहा है वही आत्मा है, वही हम है। बाकी सब हम नहीं है। जैसे भूतकाल के बारे में सोचा, मेरे को कल ऐसा हुआ था, वो नहीं है। कल ऐसा होने वाला है, वो भी हम नहीं है। अभी क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग विराट में सिर्फ अभी की बात करते हैं। इन विराट वी ओनली टॉक अबाउट नाउ। अभी क्या हो रहा है, कौन सी उंगली में ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, ठीक है, ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, नो प्रॉब्लम, बस देखते रहो और वॉशिंग होता रहता है। हम सिर्फ वर्तमान का ही बात करते हैं, अभी क्या हो रहा है। जय श्री माता जी। अभी ध्यान यही खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चंस, डाउट्स, आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए। जय श्री माता जी।